Assalamu alaikum everyone else, and today we are going to start one more poem that is not basically a poem, that is sonnet. And before sonnet we are going to discuss a little bit about the genres, which are very important, so that you must know about the genres. As you do remember, previously we have discussed about elegy and epic, then sonnet, ballad, blank, dramatic melody, or free verse. So here elegy, as we are just talking about that mournful song. अगर किसी की death हो जाती है and then regarding that poem has been written, so that is called elegy. On the other hand, epic. Epic is a poem which is long narrated poem. And then we are talking about sonnet. In sonnet, this is a type of a poem and which are having 14 lines. In 14 lines, 8 lines at the beginning, जो beginning में लिखी हुई होंगी शुरू की lines, when you will see the poem, so that is based on 8 lines and that is called octave. Remaining जो आपकी lines होंगी, these are 6 lines and this is called sestet. And they are having 10 syllable with 5 beats. ये जो इनकी first line जाएगी when we will start the poem. Next slide. Next. Change right. Yes. It is the introduction about the Wordsworth, so that when we will come to the poem, I will tell about that the beats about the poem. So first of all, we are going to discuss about Wordsworth. Wordsworth inspiration for the poem seems to come from the view he saw from Westminster Bridge in London on the morning of 31st July 1802. Although he didn't write the poem until September the same year, the people of the city were still in bed and factories had not yet polluted the air with smoke. He and his sister, Dorothy, were crossing the bridge in coach, taking them to a boat for a trip across the English Channel to France. In her diary, Dorothy wrote, "We mounted the dove coach." अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताती चलूं, that when he has written this poem, so that is the thing, he was in travel. और जब वो travel में थे, so that he has seen, क्योंकि उनको बस craze था, he was also one of the romantic poet. And whenever he has seen something good is there, something is touching to there, वो हर चीज में अपनी एक खूबसूरती, एक अपनी एक ब्यूटी होती थी. और बस जहां उनका दिल करता था, they will just jot down all the points and start writing a poem. So यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, when he has write down upon Westminster Bridge, so as he was crossing over there, so that he has liked, और वो लोगों से बड़ा नाराज हुआ करते थे. He was just angry with the people that either they don't know the value of the place and the human being, कि how lovely they are. अगर इन लोगों को पता चल जाए कि जगह या इंसान जितना खूबसूरत होते हैं, तो ये लोग उसकी कदर करना शुरू कर दें. Well, he always loves nature. So what she said, we mounted the Dover coach at the Charing Cross. It was a beautiful morning. The city, St. Paul's, with the river and the multitude of little boats, made a most beautiful sight. The houses were not overhung with their cloud of smoke, and they were spread out endlessly, yet the sun shone so brightly with such a pure light that there were even something like a purity of nature on grand spectacles. So as I have already discussed, that wherever he was going and wherever he has seen, he has just found the beautiful things. Here she was talking about the beautiful morning, the city St. Paul's with the river and the multitude of little boats. अब आप खुद इमेजिन करें, सी साइड हो एंड देन अ लॉट ऑफ बोट्स वुड बी देयर, मेड अ मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, वो कितनी खूबसूरत साइट लगेगी. Houses जो है, they were overhung with their cloud of smoke and they were spread out endlessly, till our eyesight will see, so that we will see the many more houses. Yet the sun shone bright with such a pure light that there was even something like a purity.
अब वहां पे आप सन शाइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है, और मतलब जो एक व्यू आ रहा है वो एंड लास्टिंग एवर लास्टिंग वी कैन से दैट, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है दैट एवरीबडी वांट to see that. Something like a purity of nature's own grand spectators. Okay, obviously we are having enough type of words to describe these type of places, beautiful places. So one of the places, one of them, that upon Westminster Bridge. Okay, next slide. So here we will also discuss about, as we are going to read it, and then you will see the poem, because whenever sonnet has been written, do remember the rhyming scheme can be like A, B, B, A, B, B, A. So both stanzas have been written, and one by one, line by line, we will also discuss about it. But first of all, we are going to discuss about the poem. अब जो इनकी एक लाइन होगी, मैंने बताया था इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 और जो इसकी वन लाइन होगी 5 कैन बी स्ट्रेस वर्ड, जिन पे हमें मींस स्ट्रेस देना होगा, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड देन 5 वर्ड्स आर अनइम्पोर्टेंट फॉर अस, मींस अनइम्पोर्टेंट तो नहीं होंगे, दैट इट कैन बी अनस्ट्रेसलेस, राइट। फिर क्या होगा यहाँ पे कि दैट, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो नॉर्मली अर्थ इज वी हैव डन द आर्टिकल एंड देन वी नो अबाउट व्हेनेवर वी विल राइट डाउन दिस टाइप ऑफ थिंग, so that the earth is necessary to write. But do remember, in a poem, whenever we will write down the poem, so there aren't any harsh and false rules over there, that either what you are going to write or what you are not going to write. अब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है अर्थ की, तो अगर यहाँ पे दा नहीं भी लिखा दैट इज फाइन, क्योंकि उन्होंने एक लाइन को कंप्लीट करना था, अगर द अर्थ लगा देते तो लाइन कैन बी स्प्रेड इनफ। इन पोयम यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी कि क्या आपको डालना है, क्या आपको निकालना है, इट्स अप टू यू। आपके कोई खास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, दैट अकॉर्डिंग टू दैट यू मे हैव टू राइट डाउन अ पोयम, ठीक है। ऑलराइट, सो अर्थ हैड not anything to show more fear, dull would be dull would he be of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty, the city now doth like a garment wear. The beauty of the morning silent bear, shifts tower dooms, theatres and temples lie, open unto the field and to the sky, all bright and glittering in the smoke haze. So here they are talking about the temples, that we are talking about any place where we can worship. All right, here you will see some colorful words have been highlighted: fear, by, majesty, wear, bear, lie, sky, air. So you can see these first 8 lines rhyming. This is known as octave. Do remember, this is very important in sonnet कि 8 lines होती हैं rhyming की, which is very essential, and then it is called octave, ठीक है। अब वो लाइंस कौन सी हैं आप देखें। अब ये fear को अगर हम wear के साथ कंपेयर करेंगे, यस राइमिंग स्कीम दिया। अगर हम wear को bear के साथ करेंगे, यस, एंड bear को अगर हम ear के साथ करेंगे, यस। So these are same sounding words. अब जब same sounding words ये हो गए 4 तो what do we have to do? We will have to write down a. For example, fear लिखा है, okay, A. Then wear, similar sound, then we have again written A. Then bear, again similar sound, then we have written A. And then on the other hand, air is written A, we have written over there A. Now, on the other hand, you will see majesty and sky, by and lie. These are having similar sounds, so that we are representing by B. So it is written now the rhyming scheme A, B, B, A, B, B, A. On the other hand, now we are going to start second stanza. Never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill.
Never saw, I never felt a calm so deep. The river glittered at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty hurt is lying still. Here you can see in 6 lines, the rhyming schemes are the similar words are steep, deep, asleep. So they are having the same sound. On the other hand, you will see hill, will, still. These are having the similar sound. So which are having the sound of steep, deep, asleep, we are representing by C, denoted by C, and hill, will, still, they are denoted by D. Once again, I am repeating little bit. Sonnet is a poetic form of originated from Italian, not English. ये Italian से होती है जो भी हमारा sonnet होता है. And then इसकी total lines जो होती हैं वो 14 होती हैं. वर्ड्स विलियम के बारे में वी हैव डिस्कस दैट ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट है. एंड देन इसका जो टोटल वर्क है वो मींस जो इसकी फेमस नॉवेल्स हैं, इसकी जो फेमस पोएम्स है जिसमें से हमारे पास आ जाती है टेंटेराएबे आ जाती है, जिसमें इसने कंट्री लाइफ को डिफाइन किया है. उसके बाद आ जाती है हमारे पास रिल्यूट आ जाती है इसमें ऑल अबाउट ही हैज रिटन द चाइल्डहुड स्टेजेस. दिस इज द फेमस वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. इसकी ये इसमें ये सारा उसने बताया है कि चाइल्डहुड में बच्चा मतलब किस तरह होता है एंड हाउ ही इज परफॉर्मिंग एंड एज ही वाज ग्रोइंग अप. तो उसमें क्या क्या चेंजेस ब्रिंग आती हैं और मींस देन जब वो यंगस्टर की एज में आता है तो फिर वो अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रेट करवाता है. तो दिस इज अ वेरी फेमस पोएट्री, चाइल्डहुड. Okay, and then as we have discussed the genres, now we are going to start our poem properly, and then line to line we do understand about that what the poet was saying all about it. And you do remember that Wordsworth of all the poets was the poet of nature. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया वो कहीं पे भी जा रहे होते थे, travel कर रहे होते, wherever he has found that the touching places to him, so that he just stopped over there. बाकियों को वो कह देते थे कि you can continue your journey, but he just stop over there and start writing the lines. क्योंकि वो feel करते थे कि we should have to utilize this place by praising. वो तारीफ करना चाहते थे उस जगह की, वो बताना चाहते थे लोगों को. लोगों से उनका नाराजगी का पर्पस भी यही था कि लोग नेचर से, लोग ह्यूमन बीइंग से लुत्फ अंदोज नहीं होते, उन्हें उनकी क्वालिटी का नहीं पता होता. ही वॉज अ नेटिव ऑफ अ लेक district, an extremely beautiful region of lake and mountains in the northwest of England. He loved the beauty of such a countryside with a truly religious adoration to him. नेचुरल ब्यूटी वाज एन एस्पेक्ट ऑफ गॉड. वो बताया करते थे लोगों को कि ये जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है ये मतलब किस तरीके से अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए क्रिएट की है. एंड इट वाज अ रिमार्केबल that the beauty of London just after sunrise should have struck him so forcefully. It was remarkable that he, the lover of nature at wildest, should have been moved to write. Yeah, either we should have to understand it. And then all the time he was called the lover of nature क्योंकि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, वेयर एवर ही इज वो उस चीज में खूबसूरती निकालना या उसकी तारीफ करना बहुत अच्छे से जानते थे. So never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock or hill. So now we are going to discuss about the poem, and then we will do understand that what does this poem mean and why do you think this poem has been written. The time period you do remember, 3rd September 1802 he has written this poem. Okay, here these are difficult words. You can also see like temple I have discussed in the smokeless air. The smokeless air means because it is a very early in the morning, so that there would be no fire. कोई किसी किस्म की pollution नहीं होती थी.
And steep का मतलब होता है soak. The sun is so bright in the splendor of his rising that the buildings seem to be drenched in sunlight. जाहिर है जब जैसे जैसे रोशनी आएगी तो हर चीज जो है वो चमकती हुई नजर आएगी. Glut means move smoothly. यानी कि उसने अगर मूव करना है तो बिल्कुल एक स्मूथ डायरेक्शन में मूव करना है, right? So now we are going to discuss about the poem. Go to the slide, next slide. Slide. Okay. Now, why this poem surprising? The surprising thing about this poem is that it is a view of the city that Wordsworth declares to be the most beautiful sight he has ever seen. In fact, he declares that the view is the most beautiful in the whole world. As Wordsworth, who famously wrote, I wandered, lonely as a cloud, considered nature to be a source of deep inspiration, it is unusual, he declared, a city to be the most amazing sight the world has ever known. As you have seen that picture, so that over there you will see the view. In the view, what you have seen, according to him, that is person to person, the natures can be varied. अब हर इंसान का अपना एक नुक्ता नजर होता है किसी भी चीज को देखने का. मैंने कहा ना, वो जहां होते थे, जिस जगह होते थे, वो तारीफ करना जानते थे. उसको मालूम था कि ये जो मतलब हमारे पास जगह है या ये जो चीज है, whatever, so that he knew that how to praise those things. अब यहाँ पे जो हमने व्यू देखा है तो वहां पे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट. उसने ऐसी साइट कभी देखी ही नहीं अपनी लाइफ में. एंड ही डिक्लेयर्स दैट द व्यू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द होल वर्ल्ड. उसने क्लेम किया है कि पूरी दुनिया में इससे ब्यूटीफुल जो है कोई व्यू हो ही नहीं सकता है. द वर्ड्सवर्थ हु फेमस रोट आई वॉन्डर्ड, यानी कि वो इधर उधर फिर रहे थे, ख्वार हो रहे थे, लोनली एज अ क्लाउड. जिस तरह एक क्लाउड नहीं इधर उधर मूव होता रहता, considered nature to be a source of deep inspiration. यानी कि वो इस नेचर को इतना डीपली he was just thinking about that the other people are ignoring. So now, and then city to be the most amazing sight the world has ever known. This sight which he has just mentioned over there, and he has seen that this is the amazing sight, and then in the world nobody knows about it, as the William Wordsworth has felt and as he has written about that site. Next. In the form of the poem is written in the form of Petrarchan sonnet. The Petrarchan sonnet has 14 lines, as we have already discussed, as a particular rhyming scheme, C slide, and the split into octave and sestet. The octave describes the view of the city the persona can see, and the sestet compares the beauty of the city with that of nature. I told you the first जो 8 lines है आपकी, do remember in stanza 1 beginning में भी हमने पढ़ा था, that is called octave. और जो नीचे का हमारे पास stanza आ रहा है जो कि हमारा कहलाता है sestet, that is based on 6 lines. Next. Okay. Now we are going to discuss about the tone. अब क्या होता है हमारे साथ टोन में? All right. So the tone of the poem is almost a hushed, breathless amazement, admiration. The poet is astonished to see such a perfect vision as he crosses the bridge early one summer's morning. He becomes emotional when considering the beauty of the city, such as in line 11. There is a prevailing atmosphere of silent serenity and inspiring calmness and tranquility that pervades the whole of the poem.
अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि दैट स्पेशली यहाँ पे लाइन नंबर 11 की बड़ी तारीफ की गई है, एंड ही वाज सेइंग दैट द इमोशनल व्हेन कंसीडरिंग द ब्यूटी ऑफ द सिटी, दैट ही वाज जस्ट इन द स्टंट फॉर्म, दैट हाउ amazement or how attractive he was to see that vision. According to him, वो क्या कह रहा है, this is such a perfect vision as he was crossing the bridge early one summer morning. इस व्यू को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कंसीडर करता है कि ये जो ब्यूटी है इस सिटी की वो कितनी हसीन है। स्पेशली जो उसने जिक्र किया है वो किया है लाइन नंबर 11 में। एंड देन he was telling about the atmosphere as well as that can be attract to him, and then he was too much inspired by that view. Next. Okay, yeah, here we are going to discuss about line by line analysis, that what does this poem mean, as the poet उसने बहुत सारी तारीफ कर दी है, and then he was in the depth thought to describing this poem. अब यहाँ क्या कह रहा है ये, the poem opens with a confident pronouncement. Earth has not anything to show more fear. Earth has not anything to show more fear. Let me see. The end stop, which almost looks like he is about to set out a list, suggests this line is important and the supreme quality of this beauty outclasses anything else the world can offer. The other word of for earth, soil prepares us for the comparison in the final sustet. अब क्या कहने का मकसद है यहाँ पे, इस लाइन को इसने कैसे डिस्क्राइब किया है, द एंड स्टॉप विच इज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ही इज अबाउट टू सेट आउट अ लिस्ट। अब यहाँ पे देखें बात ही वो खत्म कर रहा है कि जहाँ पे अर्थ की बात हो गई, जिस सरजमीन पे हम यहाँ पे रह रहे हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि देयर इज अ सुप्रीम क्वालिटी एंड द ब्यूटी इज आउट क्लास, यानी कि उसके पास वो अल्फाज नहीं आ रहे कि जिनसे वो इसको डिफाइन कर सके, डिटेल बता सके कि हाउ ब्यूटीफुली he was living over there or he was crossing, how the beautiful this earth is. The other word for earth is soil, prepares us for the comparison of the final sustain. और on the other hand अब ये क्या कह रहा है कि इसने एक और वर्ड को डिफाइन किया है soil, जो कि रिजेंबल कर रहा है अर्थ के साथ, एक ही बात है। वहां पे क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं फॉर द फाइनल सस्टेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, by inverting the normal word order, dull is really striking. Anyone with any intelligence, any bit of soul would have to stop and admire the view. अब यहाँ पे जो डल की बात की है, दैट इज अ वेरी नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है इंसान कि वो स्ट्राइक करता है, वो रुक जाता है, वो अपनी मतलब जहानत को चेक करता है, बिट ऑफ सोल, मतलब जरूरी नहीं है जो चीज हमारी आंखों को अच्छी लग रही है। अब उसका कहने का मकसद ये था कि wherever he was just looking that the place is so much beautiful, so that internally he was feeling the beauty of that place. Internally जब वो उस चीज को फील कर रहा है तो वो ज्यादा हैप्पी हो रहा है। Soul would have to stop and admire the view, यानी कि वो कहने लगा मैं खुद फिजिकली नहीं रुका हूँ, मेरे अंदर से मेरी रूह ने मुझे ये मुलामत की है और मैं एडमायर हुआ हूँ वो व्यू देखने के लिए। The enjambment also emphasizes the word a sight so touching, यानी कि वो मतलब इतनी हार्ट टचिंग साइट है कि मैं रुकने पे वहां मजबूर हो गया, वरना एक इंसान जरा जरा होता है, वो ट्रेवल में होता है, उसने वहां पहुंचना होता है टाइमली, तो वो फिर केयर नहीं करता इन चीजों को। लेकिन इसका कहने का मकसद ये है कि वो वहां पे रुका क्यों, क्योंकि इट इज वेरी इम्प्रेसिव साइट। The use of sibilants in lines 2 and 3 creates a breathless sense of admiration, and the final word of the line, majestic, emphasized by rhyming with line 2, conveys the regal powerfulness which overwhelms the poet here. अब यहाँ पे जो हम 2 और 3 लाइन्स पढ़ेंगे, डल वर्ड ही, बी ऑफ द सोल हु कुड पास बाय, a sight so touching in its majesty.
तो यहाँ पे दो वर्ड को जो इन्होंने हाईलाइट किया है, a sight so touching, and then नंबर 3 पे देखिए आप, यहाँ majesty वर्ड इज written। तो ये क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं किसको, राइमी को, विद लाइन नंबर 2, और कन्वे कर रहे हैं रीगल पावरफुलनेस विच ओवरवेल्म्स द पोएट हियर, जिसने पोएट को मीन्स लिखने पे मजबूर कर दिया। एंड देन ही हैज डिस्क्राइब्ड, he has averred, he wanted to tell the people about the beauty and about the importance of the earth. Next. Next. G. Okay, over there you will see line 4. This city now doth like a garment wear, the beauty of the morning silent bear, shapes, towers, domes, theatres, and temples lie, all bright and glittering in the smokeless air. So here he was talking about line number 4, introduces London and the word city. अब यहाँ पे इसने क्यों इस वर्ड को डिस्क्राइब किया है, सिटी, with a capital gives it significance. By using a smile, the city is seen a vision of beauty. जिस तरह हमारे जहनों में कोई पर्पस नहीं होता, कोई विजन सेट होता है। अगर हमारे जहनों में कोई विजन सेट होता है तो हमारे लिए काम करना उतना ही आसान हो जाता है, राइट। अगर हमारे जहनों में कोई विजन क्लियर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, विजन हमारे जहनों में क्लियर नहीं होगा, हम उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से हमें देना चाहिए, या हम उस तरीके से हार्ड वर्किंग नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है, पहले कि हमारा विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे विजन की जो बात हो रही है वो एक्चुअली ब्यूटी की भी बात हो रही है। द सिटी इज सीन एज अ विजन ऑफ अ ब्यूटी। समटाइम होता है ना, हमने ख्वाबों में, ख्यालों में कोई चीज जहन में बिठा रखी होती है और रियलिटी में हम नहीं देख पाते, लेकिन सडन सडन वही चीज जिसका रिफ्लेक्शन हमारे माइंड में होता है वो चीज हमारे सामने आ जाती है, सो दैट वी आर थिंकिंग कि वी वर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, ठीक है। अ ब्यूटी ऑफ दैट रेस्ट लाइक अ गारमेंट ओवर इट ऑल, why not dress or something more specific? Garment would suggest a comfortable, easy fit, but the word is grander than clothes and has connotation of fine material. अब यहाँ पे ये विजन ऑफ ब्यूटी की बात हो गई है, उसके बाद ये आ रहा है गारमेंट की तरफ आ रहे हैं। गारमेंट की तरफ आने के बाद ये लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल जो इन्होंने गारमेंट की बात की है, तो यहाँ पे इन्होंने ड्रेस की क्यों बात नहीं की। गारमेंट मीन्स एक जो खुला थान होता है, कपड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड, और समथिंग मोर स्पेसिफिक, और इसके अलावा किसी और मोर स्पेसिफिक चीज की क्यों नहीं बात की। अब यहाँ जो गारमेंट वर्ड सजेस्ट कर रहा है आपको, कंफर्टेबल, इजी, फिट, बट द वर्ड इज ग्रैंडर देन क्लोथ्स। अब आप इसको गौर से सुने कि यानी अब वो एक ऐसी जगह जो वो उसको बहुत मजा आ रहा है, वो हैप्पी है, वो खुशगवार मूड में है, तो अगर हम उसे बाउंड कर देंगे, अगर हम ड्रेस लें तो वो हमारे लिए बाउंड हो जाता है, इट कैन बी फिटेड ऑन आवर बॉडी। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड सिर्फ एक कपड़े की ही बात करें, गारमेंट की ही बात करें, तो यू कैन फील कंफर्टेबल, यू कैन फील इजी एंड फिट, बट द वर्ड इज ग्रैंडर देन द क्लोथ। लेकिन फिर वहां पे वर्ड चेंज हो जाएगा, ग्रैंडर रादर देन द क्लोथ, एंड हैज कनोटेशंस ऑफ फाइन मटेरियल। और फिर आपको पता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये रिजेंबल कर जाते हैं दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड कनोटेशंस। Your own find out your own meaning accordingly, and then you will have to use the fine material which can be easy or comfortable for you to use it. Next. G. Now Wordsworth lists the various aspects of the city that amaze him, preceding the nouns with two fairly simple adjectives, silent and bare. All of these things, such as towers and domes, are emphasized by one syllable perfect, rhyming of lie and sky.
The list of things found in the city are not poetic, but the compound effect is that it is a wonderfully varied picture which one can wonder at for a long period of time. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ की लिस्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सिटी that amazed him proceeding the noun with two fairly simple adjective. अब यहाँ पे उसने जहाँ इतनी सारी चीजें डिफाइन की हैं कि वो एक बहुत खूबसूरत ब्रिज था जिसको वो पास बाय कर रहा था, उसने उसको गारमेंट के साथ भी मैच किया, यानी ये खुला गारमेंट या खुला कपड़ा होगा तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे रादर देन का अगर आपका वो सूट हो तो यू विल बी फिट, आप उसमें फिक्स हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे शिप्स, टावर, डोम्स, थिएटर की बात कर रहा है, टेम्पल की बात कर रहा है, वेयर यू विल हैव टू गो फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रेयर। अच्छा, यहाँ पे है नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट व्हाटएवर, so that he has written about only two adjectives. Two adjective हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? He has discussed about the silent as well as the bare, ठीक है। साइलेंट आपको पता है खामोशी, एंड बियर यू नो दैट आइदर द बियर फुट यू आर मूविंग, इतनी खूबसूरत जगह है कि वहां तो आपको यू विल नॉट सपोज टू बी जस्ट बियर द स्लीपर्स, आप ऐसे ही मूव कर सकते हो, कभी कभी हमें बियर फुट चलना भी अच्छा लगता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स सच आर टावर्स एंड डोम्स आर एम्फसाइज्ड बाय द वन सिलेबल परफेक्ट राइमिंग ऑफ लाई एंड स्काई। यहाँ पे इन्होंने राइमिंग स्कीम की भी बात कर ली है, लाई एंड स्काई। द लिस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड इन द सिटी आर नॉट पोएटिक but the compound effect that is wonderfully varied picture which can wander for a long time period. तो इस तरीके से क्या होती है कि आप जब वहां पे मूव करेंगे यू फील कंफर्टेबल, यू विल फील इजी एंड यू वांटेड टू मूव ओवर देयर so that you will feel happy, you will feel the time can be enjoyable for you. And then now next, okay, now we are going to discuss about the final line of the octave. Octave means 8 lines. G. Octave closes with another pronounced one line and stopped statement. All bright and glittering in the smokeless air. The positive diction of bright, glittering, smokeless makes it sound beautiful, full of light, shiny like a jewel. क्या कह रहा है ये यहाँ पे? यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास फाइनल लाइव है ऑक्टोव, यानी कि 8 लाइनों में से ये जो हमारी आखिरी लाइन चल रही है, with closes another pronouns one line stop statement. Close है, एक दूसरे से लाइन जो है वो बिल्कुल क्लोज है। all bright and glittering in the smokeless air. अब यहाँ क्या कह रहा है? ये पॉजिटिव डिक्शन को डिफाइन कर रहा है कि ब्राइट, ग्लिटरिंग, स्मोकलेस, मेक इट साउंड ब्यूटीफुल, फुल ऑफ लाइट, शाइनी लाइक अ जूल। यानी कि इसमें ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि ब्राइट की बात करें तो हम रोशनी की बात कर रहे हैं, ग्लिटरिंग की बात करें तो हम चमक, रोशनी, वही चीज आ जाती है। अगर हम स्मोकलेस, स्मोक भी आपको पता है हवा में आप देख सकते हैं, लेकिन अगर वो खराब स्मोक हो तो भी पता चलेगा। स्मोकलेस एयर इट मीन समथिंग एयर इज गोइंग टू बी शाइन so that it sounds beautiful, full of light, shiny like a jewelry। यानी ना ये सारी चीजें हमारी रिजेंबल किस तरफ कर रही हैं? जूल की तरफ रिजेंबल कर रही हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ज्वेलरी उठा के देखेंगे तो वो शाइन कर रही होगी। अब यहाँ क्या कह रहा है? स्मोकलेस इज अ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एज लंदन वाज ऑफन स्मोकी एंड पोल्यूटेड। ठीक है, आजकल अगर हम अपने एरिया की भी बात करें तो नो डाउट इट इज टू मच पोल्यूशन ओवर देयर, कोई एक पोल्यूशन नहीं है, देयर आर मेनी मोर। खैर हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे लंदन की तरफ, तो वहाँ काफी पोल्यूटेड एरिया है। सच एज डिस्क्राइब्ड आर डिकन्स हार्ड टाइम,
The clean, unpolluted view, the city is profound. The final rhyming of the octo gives a light, carefree feeling to the home. अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है कि यानी कि जो भी डिकेंस है उसका जो हार्ड टाइम है और वो जो अनपोल्यूटेड व्यू है, द सिटी इज प्रोफाउंड, द फाइनल राइमिंग ऑफ द ऑक्टो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे बियर और एयर, एंड देन गिव्स लाइट केयर फ्री फीलिंग टू द टोन। यानी कि वहाँ के एरिया को डिफाइन किया गया है कि अगर वो ब्यूटीफुल है तो सिर्फ वो दिखने में ब्यूटीफुल नहीं है। अगर हम पोल्यूशन के हवाले से भी बात करें तो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, कोई स्मोक नहीं है, और जो एरिया है वो बिल्कुल अनपोल्यूटेड है, और मीन्स के अगर हम उस एरिया में जाएं तो हमारा ऑटोमेटिकली तारीफ करने को दिल चाहेगा। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं the success begin emphatically with the negative. Never the poet will compare the beauty of what he can see before him with that he was witnessed in nature. Again, these sentence structure is inverted and emphasis placed on more beautifully. अब यानी कि वो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आ ही नहीं रहा। नेगेटिव हम लोग फौरन से अगर जाते हैं तो हम लोग उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत कम देखते हैं, हम सबसे पहले नेगेटिव की तरफ स्विच कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट बात कर रहा है वो नेगेटिविटी की तरफ जा ही नहीं रहा, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, और वो कह रहा है कि उसके जहन में तो कोई नेवर वाली साइन है ही नहीं। और अगेन वो क्या कह रहा था, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इन्वर्टेड एंड एम्फसाइज्ड इन प्लेस ऑन मोर ब्यूटीफुल प्लेस। यानी कि जो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है विच ही हैज रिटन लाइक नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, कि वो एक बहुत खूबसूरत एक के बाद एक जो वर्ड आ रहा है, इट हैज बीन रिटन मोस्ट ब्यूटीफुली। अब यहाँ जो स्टीप की बात की है, हैज अ पावरफुलनेस अबाउट इट एंड द एज enjambment real place stress on in his first splendor. There is a real sense of hyperbole here, that this is the most beautiful morning since the beginning of creation. जब भी हमें किसी चीज को इम्पोर्टेंस देनी होती है तो हम अपना वॉइस का जो साउंड है, हम वॉल्यूम जो है उसका बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हाइपर बोल की बात कर रहा है कि हाइपर बोल जो है वी आर यूजिंग इन दिस पोएम दैट कैन बी हियर, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वार्निंग। और जहाँ पे हाइपर बोल की बात हो जाती है तो इट मीन्स दैट समथिंग प्रेजिंग। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मॉर्निंग की बात हो रही है, जो कि एक ब्यूटीफुली क्या है, क्रिएशन है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रही है, देयर इज अ लिस्ट इन द ऑक्टेव ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सिटी द पोएट कैन सी, हियर इट इज नाउ बैलेंस्ड विद वैली रॉक और हिल। अब यानी कि वो एक ब्रिज को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है कि वो वैली रॉक और हिल की भी यहाँ पे बात कर रहा है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेचर द पोएट कैन सी फ्रॉम द ब्रिज, यानी कि वो यहाँ जाके सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ ब्रिज की ही तारीफ करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया की ही तारीफ करेगा, वह उसने जो देखा है वैली को, रॉक को और हिल साइड को। सो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो द नेचर, नेचर्स वर्क है ना, नेचर है, अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। तो ही वाज आल्सो प्रेजिंग रिगार्डिंग दीज थिंग्स, वैली रॉक एंड हिल, एंड ही वाज हैविंग द बैलेंस। उसका कहने का मकसद ये है कि हम कहीं पे भी चले जाएं लाइफ में, देयर इज अ बैलेंस which has been done by Allah Almighty। ठीक है, उसने लाइफ को स्टेबल किया हुआ है, लाइफ जो है बहुत बैलेंस्ड लाइफ है। और क्या है कि यही नहीं, हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो वही लाइन जो वही जगह ही खूबसूरत है, बल्कि हम जहाँ जाएंगे उस एरिया की सराउंडिंग्स को भी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा दैट हाउ द ब्यूटीफुल प्लेस इट वाज और इट इज। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, ओके। Now Wordsworth continues with the usual emphatic negative, repeating never and never. Means if you will write down like this, so that means never. Never I saw, okay. Never I saw, never felt a calm so deep. अब यहाँ क्या कह रहा है, the repetition of double never, the caesars which make us stress each part of this line, and the exclamation mark placing extreme emphasis on this line. The words calm and deep are stressed in this line. अब यहाँ पे never I saw, never saw I, never felt or a calm so deep,
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन हो रही है, डबलिंग हो रही है, किसकी, नेवर की हो रही है। अब नेवर की जब डबलिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 5 वर्ड्स जो होंगे एक लाइन के वो क्या होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, और 5 वर्ड्स क्या होंगे, वो होंगे अनस्ट्रेसफुल। तो यहाँ पे नेवर की जो रिपीटेशन हो रही है विच मीन्स दैट कि यहाँ पे हम ईच पार्ट में स्ट्रेस दे रहे हैं, हम जोर दे रहे हैं उस पे। एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क प्लेसिंग एक्सट्रीम एम्फेसिस, और यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी जो यूज हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन जो यूज हुआ है, विच मीन्स दैट ओवर देयर काम सो डीप, तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस जो है वो स्लो मोशन में जाएगा, यानी कि वहां पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। डीप आर स्ट्रेस इन दिस लाइन, और डीप जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज ऑल्सो वी विल हैव टू स्पीक लाउडली लाइक अ हाइपरबोल। ओके, सो नेवर एंड डीप are your hyperbole. Yes, next. With all of the lines being and stopped, these final 4 lines are separate statements of wonder, building to an emphatic climax. The rich full use of the perfect rhyme is steep, deep, asleep, create a fullness of wonder. Gilead, although old-fashioned for glides, has a peaceful fluidity, calmness, which describes the river moving at his own sweet will. The liberated, unrestrained river is as free as his emotions. The elongated vowels in own sweet will, followed by the subtle use of personification. The sun and the river are seen as his, suggest a living force beneath the whole of the scene. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे स्टीप, डीप और एस्लीप की बात कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेसिंग वर्ड है, और जो है क्लाइमेक्स पे मतलब ये व्यू पहुंच चुका है, जो कि वो each and everything he is defining over there, and here he was also written about his own sweet will, यानी कि जब तक इंसान की अपनी विल शामिल नहीं हो, ना तो उसे कोई भी चीज अच्छी लगती हो, ना कोई उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है। own sweet will followed by the subtle use of personification. The sun and river are seen as his, suggest living force beneath the whole of the scene. अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है कि यानी कि ये वाले जो हमारे वर्ड्स आ रहे हैं, स्टीप के, डीप के, स्लीप के, तो ये क्या हमारे क्रिएट अ फुलनेस ऑफ वंडर, हैरान कर देने वाले वर्ड है, जो कि हम किसी भी चीज की प्रेजिंग के लिए यूज करते हैं। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये वर्ड यूज किए अपनी पोएम में। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, अगर हम ओल्ड फैशन की तरफ, ग्लाइड्स की तरफ चले जाएं, फ्लूइडिटी की तरफ चले जाएं, कामनेस की तरफ चले जाएं, तो रिवर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मूवीज इज ऑन स्वीट विल, and then on sweet will is followed by the subtle use of personification. Personification आपको पता है कि when you are going to resemble the person with the things, then it is called personification. ठीक है, तो इसने क्या कहा है, the sun and the river are seen as his, यानी कि कंपेयर किया उसकी तरह के, यानी कि जितनी उसमें खूबसूरती उतनी ही कहीं खूबसूरती विलियम्स वर्थ में भी है, या किसी और शख्स में भी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने किसी इंसान की तारीफ करनी होती है तो हम उसको चीजों से रिजेंबल करेंगे, बट किसी कॉमन चीजों से हम उसे रिजेंबल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जो चीजें तारीफ के काबिल होंगी हम उसको उससे रिजेंबल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या कह रहा है ये, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप। व्हाट इज द टोन हियर, डियर गॉड आपको पता है यहाँ पे स्ट्रेस से जोर दिया जा रहा है, डियर गॉड, यानी कि वो अब किससे मुखातिब हो गया, अपने अल्लाह से मुखातिब हो गया। इंटेंस शॉक, अमेजमेंट, ग्रेटिट्यूड दैट सच अ ब्यूटी एग्जिस्ट एट ऑल, यानी कि उसका ये क्वेश्चन है कि क्या ये ब्यूटी एग्जिस्ट होती है हर चीज में, इवन अ फॉर्म ऑफ अ प्रेयर, अगर हम दुआ मांगेंगे तो क्या उसमें भी अपनी खूबसूरती है। इट इज जस्ट अपोज्ड विद द कामनेस बट सिमिलर इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, the very houses seem asleep, यानी कि अगर हम हमें कामनेस से सिमिलरिटी है, हमारी जो फीलिंग्स है हर एक की अपनी ब्यूटी
The very houses seem asleep. There is an intensifier of weary, and the use of sibilance to create gentleness, the river, and the personification of the entire city seeming to be asleep, which conveys an overwhelming calmness, gentleness, surprising, is one of the world's biggest cities at that time. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, उसी की तारीफ करते करते डेयर गॉड द वेरी हाउसेस सीम asleep, कि यानी हमारे पास क्या है यहाँ पे, जो इन्होंने जोर दिया है यहाँ पे वेरी को जोर दे लिया एज अ इंटेंसिफायर। अब इंटेंसिफायर में ये लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब इसकी जो पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि इसको जो हम कंपेयर कर रहे हैं, वो किससे कंपेयर कर रहे हैं कि यानी कि देयर इज ओनली द वन हु कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ थिंग। अल्लाह अलमाइटी के अलावा तो इस दुनिया को ऑब्वियसली कोई नहीं बना सकता। फिर इसकी जो खूबसूरती है, ऑब्वियसली जो एक नेचुरल ब्यूटी है, नोबडी कैन बी कंपेयर द नेचुरल ब्यूटी विद एनीथिंग एल्स। तो क्या कह रहे हैं, सिटी सीमिंग टू बी asleep which conveys the overwhelming calmness, जिसको देखते ही सुकून मिल जाता है और हमें किसी और चीज की नीड नहीं रहती है। जेंटलनेस सरप्राइजिंग, और इसके साथ साथ के मतलब इंटरनली यू विल फील सरप्राइज दैट द समथिंग इज गुड, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटीज एट द टाइम। और ये दुनिया की क्या है, सबसे मतलब बिगेस्ट सिटी है, और ऑल द टाइम इट कैन बी, वो रहेगी। एट दिस टाइम he was just astonished one to see this. उसके बाद ये क्या कह रहा है फाइनल लाइन में, leaves us with the impression of silence and stillness। कभी कभी हम स्टंट रह जाते हैं किसी भी चीज को देख के, तो हम उसकी उस तरीके से तारीफ नहीं कर सकते जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। तो एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, द साइलेंस एंड स्टिलनेस सीम टू हैव अ सरप्राइज। कोई भी चीज जो कि अनएक्सपेक्टेडली हमें मिल जाए, तो हमारी क्या कंडीशन होगी, हम साइलेंट रहेंगे, हम स्टिल हो जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ। वी विल बी इन एस्टोनिश कंडीशन, सरप्राइज द पोएट द मोस्ट। द सिटी इज नॉर्मली लाउड। अब वो जो सिटी है वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मली लाउड है। देयर फॉर द पोएम एंड्स इन अ सिमिलर वे टू द ओपनिंग, an emphatic one-line statement which is stated in a tone of incredulity and wonder। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पोयम जो है मतलब वो एक सिमिलर वे में लिखी है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने लिखी है, उसकी एक प्रॉपर ओपनिंग है, एम्फेटिक है, और जो स्टेटमेंट वहां पे गिवन है वो क्या है, एक वन लाइन स्टेटमेंट है जिसमें थिएटर की भी बात हुई है, जिसमें टेम्पल्स की भी बात हुई है, जिसमें मीन्स द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग की भी बात हुई है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, नॉट द पार्टिकुलर हम उस ब्रिज की बात करें, बल्कि उस ब्रिज पे खड़े होके दूर दूर तक नजर जा निगाह जा रही है उस पोएट की, उसको हर वो चीज अच्छी लग रही है विच ही कैन सी क्लियरली एंड विच इज अट्रैक्टिव टू हिम। Similar way to the opening and emphatic one-line statement which is stated in a tone of incredulity and wonder। यानी इन सारी चीजों को देख के वो बड़ा इम्प्रेस है, वो बड़ा हैरान है कि किस तरीके से इन चीजों को मतलब बनाया गया है, और किस तरीके से ये चीजें जो हैं ह्यूमन बीइंग की लाइफ में इफेक्ट करती हैं, और ह्यूमन बीइंग को इन चीजों को देखकर सुकून मिलता है। राइट। ऑन द अदर हैंड, नाउ व्हाट डू वी डू? नेक्स्ट स्लाइड जी। Okay, now once again we are going to repeat it and then you may know it। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम अपने फीडबैक का। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अब दोबारा से कि क्या होता है इस पोएम में और ये सोनेट क्यों कहा जाता है। सो यू कैन सी दिस, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। सोनेट का 14 लाइंस होती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमने क्या बताया था इसमें कि वी हैव डिस्कस अबाउट द विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसके सिटी के बारे में बताया दैट व्हाटएवर ही हैज सीन ओवर देयर, सो दैट इट इज इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द लाइफ
is in a better way. और यहाँ पे ये बड़ा नाराज हो रहा है लोगों से that he was anger with them that the people don't understand the beauty of a nature. ये attract नहीं होते, they don't know about that the Allah Almighty has create these things for the people. और ये मतलब नेचर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड नेचर ही वाज ऑल द टॉकिंग अबाउट द नेचर एंड ही नेवर वांट टू मिसयूज द नेचर। ठीक है, और वो मतलब उसके फायदे ही देखता है, उसको कोई नेगेटिव थिंग उसमें नजर ही नहीं आती है। एंड इवन नाउ व्हेन ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द cities changing so quickly in the appearance, the view of from the Westminster Bridge which crosses the river Thames by the House of the Parliament is still one of the finest view in London. Central London is almost Westminster Bridge. It makes a great curve to the right and down the river. So अब वो वहां पे जब ब्रिज की बात कर रहा है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज की बात कर रहा है, रिवर को देख रहा है, तो वहां पे सारी चीजों से क्या है अट्रैक्ट होना शुरू हो गई है। वो ब्रिज की तरफ से हट गया है कि वो कहाँ है, वो ब्रिज के ऊपर है। But he was also thinking about the things which can be surrounded to him and these can be attract to him, and then he wanted to that to see the view which is very beautiful. All right, so now that is enough for us. Tomorrow inshallah we will do continue. Thank you. Allah Hafiz.